तो कृष्ण गोपाल जी, आप कह रहे हैं कि मर्क्यूरी इज मैलेफिक। मर्क्यूरी मैलेफिक कैसे हुआ? सर D1 चार्ट में सेजिटेरियस में है, धनु में, तो वो बेनिफिक रिजल्ट, और उसके बाद में D9 में वो लियो में है, तो क्रूर ग्रह की राशि में, और इधर D2 में वो वापस लियो में है, D3 में वो एरिस में है वापस, फिर D7 में वो पाइसेस में है, तो अच्छा है वो, और D12 में वो टॉरस में है, तो मतलब 3 में अच्छा है, 4 में खराब। बड़ा D30 बोल गए ना? ओह सॉरी, ओके सर, हाँ सर, मैं उसको कंसीडर। सर आपसे एक चीज और पूछनी थी जो मेरे अभी दिमाग में आई थी। जैसे आपने पहले बोला था कि प्लैनेट्स को हम लगना के साथ भी देखेंगे उसका रिलेशनशिप क्या है बेसिकली। जैसे सपोज यहाँ पे एक मान लीजिए मार्स है, मैं अभी ये नहीं देख रहा हूँ कि एक्चुअली में उसकी पोजीशन क्या है, मेलेफिक है या बेनिफिक है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ मेलेफिक है, ठीक है, तो वो क्या मैं लगना के साथ भी देखूंगा कि लगना के साथ तो उसका बेनिफिक का संबंध है उसका, तो वो मेलेफिक यहाँ पे मुझे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसे? सप्तवर्ग के हिसाब से मेलेफिक है। मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हैं। आप सप्तवर्ग के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पर? अच्छा, मतलब बिल्कुल उसके हिसाब से चलेंगे, लगना छोड़ देंगे। क्योंकि आप ये समझो, अगर सिर्फ लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग हम चल रहे होते तब तो फिर वो फंक्शनल बेनिफिट और वो वाला सिस्टम हम लोग लेते हैं। बट यहाँ पर ना आपका लग्न चेंज हो रहा है हर लेवल पे, बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, समझ गए। ना आपका लग्न चेंज हो रहा है, वहां सूर्य लग्न भी है, चंद्र लग्न भी है, तो हर बार वो फंक्शनल चेंज होता जाएगा नेचर। ठीक है, तो मतलब सप्तवर्ग के हिसाब से ही पकड़ना है बेसिकली, लग्न के हिसाब से नहीं देखना उसको। हाँ, तो अब सप्तवर्ग वाला आपने एक बार डिसाइड कर लिया, आपने पूरा 9 ग्रहों का लिख लिया, 9 ग्रहों का आपने लिख लिया सब कुछ, ठीक है, मेलेफिक बेनिफिक। वही सेम चीज आप चंद्र कुंडली पे लगाओ, वही सेम चीज सूर्य कुंडली पे लगाओ। ठीक है, चंद्र कुंडली सूर्य कुंडली में आपको दोबारा वर्ग देखने की जरूरत नहीं है, जो वर्ग आपने लग्न में देखा वही चीज चलेगी सर। ठीक है, इसलिए हमको ये टेक्निक हमने लिया। ठीक है, आई विल रिपीट द सेम थिंग इन इंग्लिश। नाउ यू ऑल कैन think like we have functional benefit and malefic, then why we are using this technique? Okay, the functional benefit you can use in lagna chart. Okay, but here in Sudarshan Chakra we are using the 3 different lagnas. Okay, now in all 3 different lagnas the functional benefit and malefic can change on 3 different levels. In order to make it constant, okay, we can use this Saptavarga scheme. So once you do the Saptavarga analysis for the malefic and benefic, now that malefic benefic is applicable in Surya and Chandra Kundi both. Simple. वहाँ फिर फंक्शनल वगैरह नहीं देंगे, ओनली फॉर इसी के बेस पे हम कर सकते। Is it okay? Any doubt? So in that case, when we consider moon as benefic or malefic, we should consider full moon as benefic and remain the no moon is malefic, right? Yes. Now. And what about Mercury? Yeah, I will explain the same thing. In Surya and Chandra and Mercury. Okay, Chandra, Moon and Mercury have special conditions. The full moon, the no moon, Mercury, whether Mercury is with the benefic planet or malefic planet, it will work accordingly. Okay, this is the whole concept. But now in Sudarshan Chakra, you don't consider all these things. Use Saptavarga, see malefic benefic from the Saptavargas and apply in your chart. That's it. Okay, no need to see the special conditions here. Okay. विनायक जी का जस्ट बेसिक क्वेश्चन है मेरा कि अगर आप ये जो बेनिफिक मैलेफिक बोल के आप लिखते जाते हो ना,
तो वो आप नैसर्गिक संबंध देखते हो? नहीं, हाँ नैसर्गिक संबंध देखता हूँ। हाँ, ओके ओके ओके, थैंक नैसर्गिक। Ray Shaw is asking, check Graha only in D1, D9, D2, D3, D7, D12, D30. Okay, in the all these 7 divisional charts. Use only in Surya Kundi? No, you don't need to use Surya Kundi. What I'm saying is, from Lagna chart, you will get the planets degree wise. Now from that planet, you can check the position of that planet in all these divisional charts. Accordingly, you can say benefic and malefic. Now, this benefic malefic is applicable in Lagna chart as well as Surya Kundi as well as Moon Kundi. When you want to predict yearly prediction to Lagna Kundi, you can apply the same benefic malefic concept. But when you want to predict the monthly prediction through Surya Kundi, again you can apply the same planets in Surya Kundi also. Okay, but again when you do the Chandra Kundi analysis, you can apply those same malefic benefic from Lagna chart to Chandra Kundi also. Simple. Sir, you said no need to apply any rules when we are checking the moon, right? Like full moon or no moon. So moon in Cancer, is it considered as it's considered as benefic only, right? Just a regular moon. Yes. Any to be irrespective of TV. Okay. Okay. So now this is the way through which you can do your malefic and benefic assessment. Initially, it will take some time because you have to check all divisional charts and you have to make lists and all. Okay, but this is easy. So once you prepare this malefic and benefic for one chart, then you can do predictions for that particular chart anytime. This is a one-time work. Okay, so now how you can use this whole system? First, you have your birth chart. Check the malefic benefic of all 9 planets. Okay, and then see the which house is activated, which year is activated in Lagna chart. Okay, make the list of all possible events by using Karak Tattva, the planet and houses. Okay, then go and check in your Surya Kundli monthly wise. Check whether that same event is matching with that particular month or not. Same thing you can apply in Chandra. Simple. Okay, so till now, if you have any doubt, you can unmute yourself and you can ask, or you can drop in chat section. So Vinayak ji, in this chart, Sun is in Lagna. So we can still apply the Sudarshan Chakra here? Yes, you can still apply it. Because in book, in BPHS, this is the line you mentioned, if Surya or Chandra is coming in the same Lagna or Lagna Surya, like in this case, then Sudarshan Chakra is not required. Okay, but you can still use it. Okay, so I have already explained this in last session. Okay, so the system which I am teaching you to predict yearly, monthly and daily, you can still apply in this chart. Now in this chart, this is easy for me to do because my sun is already in the Lagna. Okay, so this is easy for me to do monthly and yearly prediction. But for daily prediction, I have to rotate it from Chandra. Okay, you can still use it. If some person have Surya, Chandra and Lagna, all these 3 Lagnas in one house, still they can use it. Yeah, because the month and day will change. Yeah. And for Sun, Surya Kundali, so every year the first month will be where the Sun is. Yes. For every new year, Sun. Okay. Sir, in case if it is equal malefic and benefic, then we take it as a half of 50-50? 50-50, yes. Okay. 50-50 or neutral? Yeah, neutral and just yes.
Okay. And sir, in the Saturn which you had explained, you had taken D1, D2, D3, D7, D12, D30, D9 also you had taken, or D10? Not D10, only D9. Yeah, D9, no? Hmm. Okay, thank you. This Saptavarga scheme is also mentioned in Prashna Marga. If I am right, I still remember. This technique is also mentioned in the Prashna Marga. Sir, here we got Mercury 4 benefic and 3 malefic we got, and we are considering it as a benefic. So actually, if you see percentage wise, it is 60-40. So that malefic portion that is there, that result will be there, or it is totally diminished? So that result will be there. You Okay, can't ignore it. Okay, but overall we can say yes, Mercury is benefic. Okay, but whenever you see all only malefic result in yearly wise in Surya Kundli, in Chandra Kundli, only malefic results are showing. Okay, and whenever that Mercury comes into picture, then you can say yes, that 40% malefic result you can experience during this time. Okay, but we can rectify it through remedies and all, because 60% is still benefit, no? Yeah. 60% is giving you surety of remedial measures. Okay, sir. Okay. Because in order to remedy, if you want to remedy to work in your chart, you need at least 50-60% of positivity. If you have 20% of positive and 80% of negative, in that case, remedies is not good in that case. No, remedies will not work for that matter. Okay, in order to make remedies to work, at least you need some potential. You need some space, na? If 90% is malefic, only 10% is benefic, remedy is very tough for that matter. Okay, sir. No, So it is like either he will not do remedy, or else he will not find any good person to suggest remedy. Okay. So it is like that surgeon will see whether that person can bear the surgery. That much strength is there or not. Yes. Okay, sir. This is how you can think. Okay. Okay, sir. So this is the second layer of our analysis. Okay. Now you have complete picture. Okay. You know through Lagna, through Surya Kundi, through Chandra Kundi, and now you know the Saptavarga scheme. Now we have to merge these both things. Okay, to know the complete assessment. Okay, so someone is asking which chapter of BPHS is talking about Sudarshan Chakra. Now the problem is, in every edition, chapter is different. In every edition, chapter is different. I have one Parashar with me right now, and the chapter in this book is 48 number chapter. Okay, and in some book you will find this Sudarshan Chakra chapter after Ashtakvarga. There is Ashtakvarga chapter, and after Ashtakvarga you will find this chapter. So it depends. In different edition of BPHS have different Sudarshan Chakra chapter, but the complete shlokas are there. Little chapter, you can read it. You will find this concept of calculation of malefic and benefic in that chapter. Okay. So, कोई और डाउट आज के लिए? समझ में आ रहा है कि दोनों कैसे मर्ज करना है, कैसे इसको ये हमने इसकी जरूरत क्यों पड़ी करने की? इसमें सर जैसे अभी किसी ने पूछा था कि 50-50% होगा, तो जब वो प्लेनेट एक्टिवेट होगा तो मतलब 50% अच्छा और 50% खराब, ऐसा ही कंसीडर करेंगे? ऐसा कंसीडर करेंगे, न्यूट्रल इसको मान के चले हम।
वो दोनों तरीके से काम कर सकता है। 50-50 हो ही नहीं सकता ना सर, 7 है, 7 तो 50-50 हो नहीं सकता। तो सर आपने बाई मिस्टेक एक में D10 कंसिडर कर दिया था सैटर्न में, इसलिए वो 50-50 आ रहा है। D10 कंसिडर कर ली है, D30 भूल गए थे। हाँ नहीं, मैंने D30 भी आपसे किया था पूछा मैंने, था, बट एनीवेज क्योंकि 7 से करेंगे तो 4:3 आएगा। तो दैट इज ऑल्सो, आपने बोला कि रेमेडीज कर सकते हैं सजेस्ट इफ इट इज 4 मेलेफिक। सर मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे हमने इजी प्रेडिक्टिव में वो कोर्स किया था, उसमें आपने बताया था कि जैसे नेचुरल और फंक्शनल देख करके उसको देखना, तो जिस सप्तवर्ग में वो मतलब बेनिफिट दिखा नहीं रहे है, हैं। सप्तवर्ग में आपको नेचुरल, फंक्शनल, बेनिफिट, मैलेफिक ये देखने की जरूरत नहीं है, अच्छा है ना। किसी एक सिस्टम के लिए आप सप्तवर्ग वाला सिस्टम यूज कर सकते हैं। ओके, ये जो हाँ ओके, ये सिस्टम जो है वो सब इसका सुदर्शन में यही यूज करेंगे। हाँ, ठीक है। so Saturn But malefic suppose, हुआ but था। suppose if you don't use the Saptavarga scheme, if you want to use functional malefic benefit, still you can use it. Still you can सर use the क्या functional सर? malefic benefit. If you use the functional malefic benefit thing, okay, you can still use it. So in that case, don't use the Saptavarga scheme. ओके ओके, जैसा कि हमारा बीसीपी और वो जो इजी प्रेडिक्टिव और जो ईयरली ट्रांजिट वगैरह देखते हैं हमारे। So I'm just correcting myself. Sir, Saturn malefic हो गया ना सर? Saturn यहाँ बेनिफिक है ना? बेनिफिक हो गया पॉइंट वाइज? हाँ, 4 है ना, 4 and 3, 4 बेनिफिक and 3 malefic. सर D1 में सर वो सैजी में है, D2 में लियो में है, D3 में एरीज में, D7 एक्वेरियस बता रहा है, D12 एरीज, D30 सैजी एंड D9 कैंसर। उस हिसाब से सर सैजी में बेनिफिक रहा, लियो में बेनिफिक, कैंसर में बेनिफिक, हाँ, और उसके बाद लियो में मैलेफिक है, एरीज में मैलेफिक, मैलेफिक, एक्वेरियस में मैलेफिक, एरीज में मैलेफिक है और सैजी में बेनिफिक। तो 3 बेनिफिक निकल रहे थे, 4 मैलेफिक हो रहे थे। हाँ तो मैलेफिक हुआ फिर, सो एक कैलकुलेशन में करो। और क्योंकि पहले D10 ले लेते इसलिए वो मेरे से गलती वहां हो रही थी 8 के कारण। थैंक यू। D30 and D7 एक्वेरियस है ना, एक्वेरियस एंड एरीज है। वो सर इतने सारे एक साथ हैं इसलिए कंफ्यूजन होता था वो चार्ट। You can see the divisional chart. अब divisional chart देख के भी इसको कर सकते हाँ हाँ वो सही रहे। हैं। And अतुल बत्रा जी ने पूछा है, for daily prediction when we use moon lagna we take 2.5 days for house, total 30 days for 12 houses, but sometimes in calendar month we have 31 days house, so we count for an additional days. For additional day, we consider lagna once again. If you find the 31st day, after 30, consider lagna for 1 day. But this is applicable only for the Chandra Kundi. Okay. और मंथली जैसे सूर्य का देखना है तो वहाँ कभी 28 का जैसे महीना होता है ये, तो उसके बाद 30-31 का, तो इसमें फिर वो जहां पर जाकर 28 खत्म होगा उस हाउस को रोक देंगे। ओके ओके Okay. So this is the thing. So we will end our class for today, but in next session we start with example charts. Okay, but before moving to example chart, I will show you the presentation which we have already covered, but still I will show the presentation as a review for whatever we have studied till now, and then we'll move directly to the example charts. Vinayak ji, before you do that, can I ask a quick question, Yes. please? In the example, आपने कहा था Sagittarius लेना है, तो वो कनेक्शन क्या था Sagittarius का, वो मैंने मिस कर दिया। एग्जाम्पल में सेक्रेटरीज लेना है, समझा नहीं? सेक्रेटरीज किस लिए?
you took Sagittarius also in your prediction. We will have to consider Sagittarius. In which prediction, ma'am, you're talking? You were saying childbirth का देखना है 5th house and 5th lord and Karaka Jupiter. So we have to see the 5th house, the 6th house, the 4th house, because Mars is sitting there. Yes. And then you said something about Sagittarius. No. I said Capricorn. Because Okay. Mars in D7, it's in Capricorn. Yeah, that okay. We are taking the second house. Okay. वो तो question. No. Now what you are asking, I'm saying in transit Jupiter is in Capricorn, so this event is possible. Okay, but same time Jupiter from Capricorn it moved back to the before moving to Capricorn it's in Dhanu Rashi. Okay. Yes. So if Jupiter is in Sagittarius, then also it is aspecting Aries, na? Correct. Yeah. Okay. In that case, also this is possible. And yeah, conceive can take place. Yeah, conceive all these things we can say, and when it moves to Capricorn, Sagittarius, and birth can take place in Capricorn. Yes. Can we say that? Yeah. Yeah. Okay. Can we get birth details for this chart? So when we want to practice it, we can make the chart. In chat section, you can write it down. It's the birth details, and now I want 7 a.m. Sunita ji, what you asking? Is it 7 a.m.? 7 a.m. Yes. Okay, thank you. 7 a.m. Now, in next class, I want everybody at least practice this thing of adjustment of strength, this malefic and benefic, and this Sudarshan Chakra system at least on 5 charts. Okay, and then make the conclusion and then let me know how it's working. Vinayak sir, one question sir. हाँ जी. सर जैसे सूर्य और चंद्रमा को लग्न बना लिया, जैसे लग्न कुंडली में पहले लग्न से हमने देख लिया कि उस साल मान लीजिए 6th हाउस या 7th हाउस एक्टिव है, और फिर हमने सूर्य कुंडली को लग्न बनाया, तो सूर्य से सपोज सूर्य कुंडली का 12th हाउस एक्टिव है, तो उसको को रिलेट कैसे करेंगे सर? उस 7th हाउस और 12th हाउस को कैसे को रिलेट करेंगे सर? उस 12th हाउस को हम लग्न कुंडली के हाउस में देखेंगे या सूर्य कुंडली के 12th हाउस से कलेक्ट करेंगे उसको सर? नहीं, दोबारा पूछिए एक बार. जैसे लग्न कुंडली से हमने देखा 7th हाउस एक्टिवेट है उस साल. ठीक है. जब सूर्य कुंडली हमने फॉर्म करी तो उससे हमने पाया कि उसमें 12th हाउस एक्टिवेट है. अच्छा, ठीक है. तो सर उससे कोरिलेट कैसे करेंगे? अब उस 12th हाउस को हम लग्न कुंडली के हाउस में जाके देखें या 7th हाउस के रिस्पेक्ट में उस 12th हाउस को माने? कैसे कोरिलेट करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे जी कि 7th हाउस एक्टिवेटेड था लग्न चार्ट जी, बहुत सारे पॉसिबल रिजल्ट लिख लिए. जी 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 जी. सपोज करिए आपने 6 इवेंट लिखे आपने, वो 6 इवेंट मान के चलिए कि दैट इवेंट इज रिलेटेड टू सम इंजुरीज और कोर्ट केस और समथिंग लाइक दैट. जी जी. When 6th house activates, you can have a financial gains. ओके सर. 6th house 11 से कनेक्टेड था, तो ऐसा कुछ इवेंट आपने लिखा. हो गया. जी जी. जब आप सूर्य कुंडली से देखेंगे, जब आपका 12th हाउस एक्टिवेटेड है जी, तो पहले का सारा भूल जाओ. ठीक है, आप फ्रेश देखो. 12th हाउस एक्टिवेट हुआ, वहां पर क्या साइन कर रहा है, क्या रिजल्ट वहां पर बन रहा है. ठीक है जी. फ्रेश एनालिसिस कीजिए. उसके बाद देखो कि वो जो इवेंट आप 12th हाउस में बता पा रहे हो सूर्य कुंडली से, उनमें से कोई इवेंट मैच कर रहा है आपके लग्न से जो आपने पहले इवेंट लिख के रखे हैं. सिर्फ वही इवेंट को पिक करो बस. तो क्या उसमें से जुपिटर का ट्रांजिट भी देखेंगे सूर्य कुंडली में? फिर इसमें कोई ट्रांजिट की जरूरत नहीं है फिलहाल. बिना ट्रांजिट की जरूरत. ये सर जो आप देखने का बात बोल रहे हैं इवेंट को,
तो ये वैसे ही जो हम बीपीएचएस में, जो बीसीपी में हमने पढ़ा था कि 3 लेयर में जो देखना था उसमें से कुछ 2 होगा। वैसे ही। ओके। तो मलय जी इसमें क्या है ना कि आप इंडिपेंडेंट ट्रीट करो आप, है ना, लग्न को, सूर्य कुंडली को, चंद्र कुंडली को जी। तो तीनों में देखिए क्या कुछ कॉमन इवेंट आपको मिल रहा है। ओके, ऐसे ठीक है। okay. जी। So I will repeat the same thing in English. So Malay Sharma is asking, suppose if in Lagna chart 6th house is activated this year, okay, but in monthly wise, Surya Kundli wise, 12th house is activated. So how we can see the result? Whether we have to check that 12th house in Lagna Kundli or what? So what I am suggesting is, when you see the Lagna chart, 6th house is activated. So write down the all possible events of 6th house. See where 6th house is connected to 11th house or 2nd house or 4th house. Then derive those results. Write down at least 10-20 events. Okay. Now when you do the monthly assessment and you are seeing 12th house is activated this month. So now when that 12th house is activated, write down the all possible events. And this match both things from Lagna and from month. Write down the common events, and that common event will take place that particular month. This is how you can do it. Simple. But in this case, so we take the significations of the 12th house because it is 12th from sun. So it still be considered 12th house karakas, significations, correct? Yeah, 12th house karakas you can say, okay, but you need to see the complete picture, okay, like where the 12th house lord is going, in which house 12th house, how many planets are aspecting, okay. So by seeing all this complete picture, then come into conclusion. So if it's 12th house, it doesn't mean it will only give the malefic result. Okay, like this. So now my point is, consider all these Lagna chart, Surya Kundli, Chandra Kundli as an individual chart. And study it as an individual chart, then you will get a clear idea. Okay, but if you try to merge all these Kundlis in the beginning, then it will create confusion. Consider it as an individual charts. Sir, this with Surya Kundli or Lagna Kundli, we use Lagna, then first house, second house, then we treat that as a Lagna. So similarly, Sun Kundli also, we have to whichever month is activated, that we will treat as a Lagna or that house. See, you can treat as a Lagna to just the finer event, more finer, refined event kind of event. And you can make it as ascendant, okay. But in the beginning, okay, don't go for as a complete different ascendant. Okay. Consider only 3 ascendant, Lagna, Surya and Chandra. That's it. Okay. But when you get master on this whole system, then at later stage, what you can do is, on every house activation, you can consider it as a different Lagna, and then you can do the complete assessment. So when you do that thing, then you will get an complete picture of every relatives with you, your brother, sister, mother, and all these things. If you want to see the complete analysis for every month for every relative, then you have to consider that particular house as ascendant. That is the advanced thing. Okay, but for now, in the beginning, don't go for that. Consider only these 3 Lagnas and see all these events from these 3 Lagnas. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. At least try to predict 10-15 events from this thing only. Okay, Sir, then after practicing 6 months, 7 months, 1 year, then go and create your complete different ascendant from the activated house. Sir, without considering transit on the Lagna also, there is no need to consider transit or Lagna chart in this system. No, you can consider, like, see, you want to judge the yearly result, okay? Yes, sir. Yearly result, you are seeing the Lagna particular, like, let's say 9th house activated. Yes, sir. Now you want to make a list of predictions. Yeah. While making a list of prediction, if you want to use transit in Lagna chart, you can use it. As per BCP.
As for BCP, you can use the transit. Okay. So Okay, don't sir. use transit for Surya and Chandrama for now. Okay, sir. Okay. Okay. You can use transit only in the Lagna chart for time being. Okay. Okay, because Sun, by making Sun as a Lagna, you already getting the monthly event. Yes, What sir. do you transit? For yearly event, we can use the BCP technique. Yes. After that, we can consider the sun as a Lagna chart and then moon for daily prediction. Simple. BCP is only the Lagna chart. No? For yearly. First layer is only BCP. Yes, sir. Got So if we are doing it for the relative, we rotate the chart in BCP, but then the sun and moon will stay the same. It will still be sun Lagna and moon Lagna. Yes. Correct? For the relative. Say if it's the 5th house child, so 5th house will be the Lagna, yearly Lagna, and sun and moon will Yes. Same. be same for them. First month. Okay, thank you. So it's not DCP, it's a BCP, Bhrigu Chakra Paddhati. Bhrigu Chakra Paddhati means the same thing which we are doing with the Lagna. 1 year, 1 house. Second year, second house, like this. This is Sir, we have another name, we call it BCP also, Bhrigu Chakra Paddhati. sir, I have a question. Yeah. Like if someone's, suppose 4th house is active according to Lagna, and then according to Sun also, the same house is active, and the planet sitting over there is malefic, then the whole year will be little not good. No, repeat your question once again. Okay, suppose someone's 4th house is active, okay, according to Lagna, and according to the sun chart also, sun kundali, the same house is active, and the planet sitting over there, suppose like Mercury is sitting over there, and the Mercury is malefic. The earlier calculation that we did, according to that, malefic 0.1 over there, then the year would be little bad. Yeah. Now, when you see that malefic Mercury is also showing the malefic houses connection that Yes, particular year, then you will see the malefic result. Okay. Okay. This is how we can do it. What do you mean by the houses, malefic houses? If it is showing malefic, owner, lord of malefic houses? Yes, 6, 8, 12. Okay, if Gemini and Virgo are in 6, 8, 12. Yes, yes. Okay. Or something is aspecting a malefic planet, is aspecting Mercury. That is also possible. And it will be super malefic in the month, maybe in the first month, or the 4th, if according to the sun, the same house is active. So that month will be especially malefic. Yes. Because the month will change. Month will change, but still, if malefic aspecting and malefic planets are there, you can expect the malefic result. Okay. Now see, when we say the malefic, so malefic, don't consider it always a benefit, always as a malefic result giving planet, because sometimes malefic planets can also give good result depending upon the nature of result. Okay, like court cases and all these things, malefic planet will give good result. For winning any kind of competition and all, we need malefic planets. Are you getting me? So accordingly, you have to judge. Okay, so now, सर मतलब पापी ग्रह जो है वो खराब कामों के लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं। हाँ, ठीक है। सो अब आप लोग के पास 2 तरीके हैं मेलेफिक बेनिफिट जज करने के। एक तो फंक्शनल मेलेफिक बेनिफिट ले सकते हैं, अगर आप वो यूज करना चाहते हैं तो वो यूज करिए, तब इस सिस्टम को यूज मत करना कहीं भी, ठीक है। अगर फंक्शनल मेलेफिक बेनिफिट यूज करते हैं तो आपको सूर्य कुंडली से भी फंक्शनल मेलेफिक देखना पड़ेगा, चंद्र से भी देखना पड़ेगा, लग्न से भी देखना पड़ेगा। अगर आप सप्तवार को यूज करते हैं तो इसको खाली एक बार यूज करना स्टार्टिंग में बस, ठीक है। I will repeat same thing in English. Now you have 2 parameters to judge the functional malefic
First one is a functional malefic benefic. You can check the nature of planet as a functional malefic and benefic. But if you are using this system, then you have to check the functional malefic benefic through Lagna, through Surya Kundli, through Chandra Kundli, on all three levels. The nature planets can change at every level. Accordingly, you can judge it. But if you want to use the Saptavarga system, you have to apply only one time in the beginning. And that same nature of planets you can apply in all three levels. Okay, now it depends upon you how you want to do. Both will give the same result. But Vinayakji, as per you, which one is the best system to use? तो देखिए ना, मैं जो यूज करता हूँ तो फंक्शनल मैलेफिक बेनिफिट लेके चलता हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, बट उसमें है कि थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको ना हर लगने में आपको अलग अलग चेंज हो जाएगा नीचे। जी जी जी, हाँ ये तो है, टिपिकल हो जाएगा। Sir, I missed out. Sir, September in Sudarshan chat only you said. Na? The last line what you Yeah, last line was if you are using this Saptavarga, I didn't get. Okay. yeah, if you are using this Saptavarga system, then you can prepare your Saptavarga scheme for benefic and benefic for first time only in Lagna chart, and the planets which are benefic and malefic, you can apply this benefic malefic nature of planets in all three lagnas. You don't have to check at every level. You can apply this on all three lagnas. Okay. Now I am personally using functional malefic and benefic, which you have to check at every level. At Surya only it can change, Chandra only it can change, and Lagna it can change. It will take some time, but mentally I can calculate it faster as compared to the Saptavarga scheme. But some of you can find Saptavarga scheme is more easier for you. So you need to calculate only one time and then apply it on every lagna. Simple. Depends, but person you have both options. You can use it as per your comfortability. Thank you. Okay. रिजल्ट में सर फर्क आएगा ना थोड़ा? नहीं आएगा, सेम आएगा। ओके, सेम आएगा। आपका काम बढ़ जाएगा बस, अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं, अगर आप फंक्शनल मैलेफिक बेनिफिट लेते हैं, तो इट विल बिकम हेक्टिक। So are there any rules for functional to calculate the functional malefic benefic? Just according to malefic for every ascendant fixed number. We have a fixed planets malefic and benefic for every ascendant. Okay. You can read about that thing. If you don't know, then I can cover that technique, this thing in next week. Okay. So this is the thing how we can do it. So yeah. So it's only one level. According to the lagna, we see what is functional malefic benefic. Are there any other rules? Are there any other layers to it? No. Okay. According to lagna. Yeah, if you can cover it next, that will be good. Quickly. Yeah. So I will give you the rough idea about this functional malefic benefic. Also some other points, and then we can quickly move to our example. Sir, you said you are going to discuss the Karakatvas also. Karakatvas on a high level. Karakatvas of every planet and house. On a high level, you mentioned in the last class that you're going to discuss today, but I think today we didn't get a chance, right? Maybe if we get time next week. Okay, we can discuss that next week. हाँ, वो आपने बोला था, आई थिंक वो शायद मैं उसके बारे में बताऊंगा। अगली क्लास में बात करते हैं इस पे। हाँ जी बिल्कुल। तो आई थिंक आज की क्लास इजी था एंड कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अभी अगर आपके दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो हम एग्जांपल चार्ट हम लोग इजीली कर पाएंगे। सर ये श्लोक 15 और 16 जो इसमें है सुदर्शन चक्र में जो आपने समझाया आज, द फर्स्ट पार्ट इज सप्तवर्ग का टेक्निक है उसमें, बट द सेकंड पार्ट उसमें प्लैनेट्स ओन his sign of exaltation and benefic varga are considered auspicious. So that makes it more benefic.
एक्सप्लॉइटेशन डेबिलिटेशन वाला सिस्टम है ना? हाँ दैट विल मेक चेंज। ओके, बट अभी हम क्या करते हैं ना, सेकंड पार्ट अभी फिलहाल आप रहने दो, उसको यूज मत करना ना, उसके चलो अभी। ठीक है सर, ठीक है, मैंने बताया ना कभी शुरू में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हाँ, अभी क्या करेंगे, अभी ऐसे लेंगे, ठीक है, वरना फिर आप ना उसको फिर आप चेक करने बैठेंगे, इट विल टेक टाइम। दूसरा, एक सीख रहे थे। इसी का एडवांस वर्जन फिर ये होता है कि फिर हर लगने के अकॉर्डिंग ना वो चेंज हो जाएगा। ओके, हर लगने के अकॉर्डिंग भी फिर मेलेफिक बेनिफिट चेंज होता है, वो थोड़ा उतना टिपिकल होता है। इसमें उतना नहीं करके अभी हम खाली इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है सर, बेटर। ये है, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। We will end today's session and practice this system on as many as chart possible, and try to do this Sudarshan Chakra system for yearly and monthly level at least. I'm not expecting the Chandra only for now. Let us go till Surya Kundi. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. By tomorrow in Thinkific. And if you have not received the Thinkific access, just let me know. You can drop an email to us. We can give you the access. Yeah, I did not receive the link. So you just drop an email on admin@saptarishiastrology.com. Okay. Okay. तो नीरज, Thank you, sir. सर अब ये जो हमारी इजी प्रेडिक्ट वाली ये सैटरडे को होगी क्लास सर? हाँ होगा, सैटरडे होगा। और ये बीटीआर वाली कब वापस? बीटीआर वाला कौन सा? वो वेबिनार? हाँ फ्री वेबिनार, उसका वापस वो तो फ्री है, वो जब फ्री टाइम मिलेगा तभी करेंगे उसको, देखते हैं जैसे होगा, मैं अनाउंसमेंट कर देंगे उसको पहले। हाँ नहीं, उसका एक पहला एक क्लास हो चुकी है, इसका मैं करूंगा आगे। सर वो क्या मेल का प्रॉब्लम है, इसलिए कोई ऐसा कोई ग्रुप आपने कहा था पिछले से पिछली क्लास में कि ऐसा कोई ग्रुप है जहाँ ये फ्री वेबिनार वगैरह के लिंक वगैरह मिल वो ब्रॉडकास्ट में अपना नाम ऐड करवा लो ना। सर मैंने मेल किया है लेकिन सर नहीं हो रहा वहाँ पे, पता नहीं ऐसा हो नहीं, आपने ऑफिस का नंबर सेव नहीं किया हुआ है ना, दिक्कत ये है। आप ऑफिस का नंबर सेव करो पहले तो, ठीक है? किया हुआ रंजन पब्लिकेशन के नाम से, और मेरा पिछली बार सुदर्शन का मेरा आया नहीं था तो उन्होंने फिर वहीं डाला था व्हाट्सएप पे, लेकिन मैंने ग्रुप के लिए कहा तो उन्होंने कहा कोई ऐसा ग्रुप है नहीं। तो ग्रुप तो है ही नहीं ना इसमें, ग्रुप नहीं है। मैंने बोला कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपका नाम वो ऐड कर देंगे ना, तो वो जब भी भेजेंगे सबको आपके पास भी जाएगा, आपके इंडिविजुअल मैसेज पे जाएगा। ओके ऑफिस का नंबर है ना, उसके उस नंबर से आपके पास आएंगी मैसेजेस। ओके है ना, तो आएगा। उसमें कोई ग्रुप नहीं है, वो अपने वो उन लोगों ने बना रखा है ग्रुप अपना ऑफिस में, तो वो जब एक को मैसेज भेजेंगे वो सबके पास जाएगा अपने, तो कोई मिस नहीं होगा। तो वो रंजन पब्लिकेशन नहीं है, वो सप्तऋषि पब्लिकेशन डाल देना। जी सर, नाम गलत लिखा हुआ आपने इसमें। जी सर। एक सर ये फलदीपिका का अभी जैसे वो कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, तो फ्यूचर में भी इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकता है इसका, क्योंकि फ्यूचर कभी तो कभार ऐसा कोई प्लान है नहीं हमारा अभी, बट मे भी हो सकता है सारे वीडियो हम लोग यूट्यूब पर डाल दें, ये भी पॉसिबल है। ओके ठीक है, तो हो जाएगा। थैंक यू सर। Thank you. So you all are invited for this Faldipika course. If you want, you can attend it, but that course is in Hindi only.